त्या भाषणबाजी आणि आर्ग्युमेंट्स आणि काउन्सिलगिरी याच्यातून सॉल्व्ह होणार नाहीत असं मला वाटतं. माझं प्रामाणिक मत. मी स्वतः कधी कोर्टात जास्त प्रॅक्टिस केलेली नाही. काउन्सिल लोकांना मी पाया पडतो, कारण काउन्सिलची फी 1 मिनिटाला 1 लाख ऐकून मी पळून गेलो. कसलं नाही देणार. आता ज्युडिशियल ट्रान्सफरची वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टीचं मी अक्षरशः मॅथ्यू सरांच्या इतक्या पाया पडतो. एकदम लहान माणूस आहे मी. रात्री झोपत नाही, रात्रभर जागतो, रात्रभर लिहित असतो, विचार करतो, दिवसा कामाला लावतो लोकांना. माझे विचार घ्या आणि क्रांती करा. आता क्रांती कसली? एकत्र व्हा, क्रांती आपोआप होईल. आज मला सांगा की आज मॅथ्यू सर आज यांनी एक युनियनच काढली. आता ही युनियन कुणाची आहे? वकिलांची. 4 टाळकी वकिलांची एकत्र येऊ शकतात का? कारण वकील म्हणजे एकमेकांचं त्यांचे कधी एकाच कायद्यामध्ये इंटरप्रिटेशन 17 करणारे प्राणी म्हणजे वकील. अरे तुम्हाला कळत नाही? कायदा एक आहे, इंटरप्रिटेशन आहे, 17 परत जजला कामाला लावता. मग जज स्वतःचं डोकं चालवणार, खालचा जज असं मला वाटतं. अरे तुझं जजमेंट, मग त्याचा वरचा, मग त्याचा वरचा, मग सुप्रीम कोर्टात अजून बसतात. मग सुप्रीम कोर्ट बेंच सगळ्या गोष्टी, आणि मग ते सुप्रीम कोर्टात जजमेंट येतं. मी हे सगळं बोलतोय इथं बोलतोय कारण जस्टिस ताईल रमाने येणार होत्या. आता ते जज इथे असते तर मी घाबरलो असतो, कारण मला ती कंटेम्पची भीती वाटते. हो, त्याला म्हातारपणी 60 वर्ष झाले, कोणी मला टाकलं जेलमध्ये, मी रात्रभर जागणार आधी तर माझे काय हालत होईल. म्हणून अक्षरशः सांगायची गोष्ट ही की मॅथ्यू सरांनी हे जे क्रांती सुरू केलेली आहे की वकिलांना एकत्र आणायची, अक्षरशः संपूर्ण देशाचं राजकारण, संपूर्ण देश आणि सगळ्या जगात सुद्धा बघा ना. हो, आता ज्या क्लिंटनच्या मिसेस आता प्रेसिडेंट सुद्धा होतील, मला वाटतं एक बाई व्हावी. आपल्या भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी झाल्या, पुन्हा ब्रिटनच्या झाल्या. या जगाच्या महासत्तेची प्रेसिडेंट बाई व्हायला पाहिजे. आता कोण आहे त्या बाई? त्यांचे मिस्टर कोण आहेत? वकील. म्हणजे देशाचं खरं राजकारण, जगाचं खरं राजकारण हे वकील लोकच चालवू शकतात, दुसरे नाहीत. वकील इज द क्रीम ऑफ सोसायटी. आता क्रीम म्हणजे काय? केकवर क्रीम असते ती. मला क्रीम खायला खूप आवडते आणि मी क्रीम खातो. पण मला असं म्हणायचंय, या संपूर्ण समाजातली ती क्रीम सोसायटी म्हणतात, वकील नाही, बरेच ती क्रीम सोसायटी. I would limit my subject only with regard to a point that Honorable Shailesh Gandhiji has spoken about. This is the lives of the poorest people of this country are getting ruined. Although the entire judicial system of the entire world is based upon one basic philosophy, let the justice be done though the heavens fall. इसका मतलब सिंपल हिंदी में ऐसा होता है, अगर विश्व के सारे स्वर्ग भी अगर गिर जाते हैं तो होने दो, लेकिन जस्टिस करो. बट इन रियलिटी इन आवर कंट्री वी आर इन्फ्लिक्टेड विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स that one comes from this community, one comes from this class, and there is so much class bias in this country that the fundamental rights given to the people, in fact written by the people to themselves while making the constitution, are totally now depending upon the mercy of some people sitting in the judiciary. That has become the fact. Shailesh Gandhiji has given an example of one Mr. Tukaram. You will be all surprised to see a live example. He is sitting in this room. One Mr. Gopal Shetty, please uta. He is another Tukaram. I will tell his story in a short time. This man is hailing from Nagpur area. He was doing some job in the Mumbai. In the year 2009, he was arrested by the police machinery under the charge of the rape. He was denied the bail. During trial, he was in jail. He was convicted. During appellate proceeding also, his bail petition was rejected by the court, simply concluding with 1 or 2 lines that there is sufficient material against him, therefore he cannot be bailed out. He served out the entire 7 years imprisonment in the jail. He came out. Thereafter, the judgment of the High Court comes and he is told that you are not guilty. You are implicated by the police machinery. During these 7 years, what happens? During these 7 years, his father dies out of the heart attack. He could not sustain the shock.
his wife left. She married with somebody else, leaving 2 daughters on the road. Thanks to some that patronage of some machinery, these 2 daughters are today also staying in that orphanage. They are getting education. He has no place to stand today. He has no place to reside. He has nothing to earn. What this man has done, in fact, he is not the only one. I suppose in the year of 2012 around or 10, I came across with 2 news. One was where a man was acquitted after he served 20 years. In relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence, I would submit respectfully that recording the proceedings of a court do not meet any of these, and therefore I believe the turning down of this petition was not really in the interest. I mean, legally you can interpret it any way you like. I genuinely believe there was a scope for the court to legally interpret in favor of the petitioners and declare that recording should be done, or at least it should be desirable. It may not have mandated it, really speaking. If the court say they cannot order recording of their own proceedings, how do the court say that vehicles must only have CNG in Delhi? How do the courts declare a wide variety of things? There is no legal direct support for this. But the courts rightfully say that these are things which can get included in right to life, right to information, freedom of expression, etc. I believe that would have been the right position to take. Having said this, I would like to also say what could have happened because of this. They could have kept recordings for about 2 months and given the recordings and the right to information to people, the faith in the judicial system would have gone up. Of course, it can be argued that the faith in the judicial system is already at a very great high. Nobody questions the courts. I would like to submit that the truth really is slightly ugly. The truth, my friends, is that over 80% of India's population will go to the much maligned police if required to. And roughly I can make this statement without any contradiction that over 80% of India's population will not go to a court, even if they need to. I think there is some reflection necessary to compare these things. People will go to alternate dispute mechanisms like Dawood Ibrahim and Arun Gowdy. People will find ways of saying, okay, you go to a court and then 20 years you spend in the court. This, I think, is unfortunate, and there is a need to change this. And this is the other thing which I told Mr. Matthew I would be talking about. Delays in justice. You are talking of making the court proceedings transparent, better. But what about those who really have no access? Or तो अगर हम जब जानते हैं इस स्थिति जब है तो इसमें जुडिशियरी को दिया जाता है। मेरा समझ में मेरा आज 63 साल उम्र हो गया, शायद कल भी मैं मैजार उठाऊंगा, क्योंकि मैंने 37 इयर्स का प्रैक्टिस का बाद में मेरा ये मिला, मैंने क्या दिया दुनिया को। कोई भी जज यदि रिटायर करता है वो भी यदि अपने से पूछे ये हमने क्या दिया दुनिया को, मेरा विचार यही है, सिंपली हम बोलना चाहता हूँ, विचारक उसी को बोला जाता है जो क्या विचार करेगा ये हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आगे बढ़ा। मेरा सिस्टम यही है, किसी को भी अपॉइंटमेंट हमारा उम्मीद होता है जो उसको पहले यदि चाहना चाहिए उसको 45 साल से या छोटा बेला से वो ट्रेनिंग करेंगे और वो पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, और वो यदि एकदम पूरा सीनियर हो जाएंगे, जब उनका पूरा ज्ञान हो जाएगा तभी उनको मुंसिफ से शुरू करके मैजिस्ट्रेट से शुरू करके एकदम पूरा सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। उसका आगे एक पूरा धोखाबाजी है। ये जो जज लोग जो ये बैठा हुआ है ये तो मालूम होता है हमारा सबसे बड़ा धोखाबाज है भाई। मेरा 37 इयर्स का प्रैक्टिस यही बोलता है ये लोग पैसा के लिए बैठा हुआ है। इसको क्यों हम जज बोलेंगे, इसको क्यों हम सम्मान करेंगे, इसको तो हमारे विचार से मालूम होता है ये सबसे घटिया होता है तो वो जज होता है। मेरा विचार होता है कि अगर कोई भी जज का नौकरी के लिए यदि ऐसा करके यदि उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, हाँ परीक्षा दो,
IAS होना। तो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी हमारे देश में, ये तो मानो सरसों में भूत है, जो सरसों से हम भूत को भगाएंगे, उस सरसों में ही यदि भूत रहेगा तो हम भाई भूत को भगाएंगे कैसे? तो पहले ये सोचना चाहिए, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े थालिया रानी से शुरू करके बड़े बड़े वकील का नाम होता है, बड़े बड़े किताब पढ़ते हैं हम लोग, पूंजी पढ़ी पढ़ी जगत को पंडित भयो ना कोई, आई अच्छा प्रेम करे पंडित है वही। जिसे मानवता का प्रेम नहीं होता है वो लोग जज बैठते हैं। मेरा दोस्त राजेश्वर पंचाल जी बोल दिया एक जज को लिए इतना बड़ा पनिशमेंट हो गया है टाइम्स नाम का, वट एवर मेगी, ये क्या? If not there, at least it's here. Yeah. It's over.